Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to talk about the latest launch from the brand Lakme, that's Lakme 925 Vitamin C range. Being a skin freak, I love trying new products, and this product was sent to me by the brand, and it states that it has quite a few good ingredients such as shea butter, murumuru butter, and 100% real kakadumu plump. So I've used this product for almost 10 days and I'm gonna share my thought about it. So what is the flow of the video? I'll just tell you. I'm gonna talk about the packaging, the ingredients, and the consistency of the product along with my experience with the product. So what are we waiting for? Let's get started. So this is the PR package which I have received. I don't know कि अगर आप order करते हैं तो आपको ऐसा packaging मिलेगा कि नहीं, but this is what I have received. Now once you open the box, you see the pamphlet which talks about the range. Like it states that this is Lakme 925 Vitamin C range. The major ingredients are shea butter, murumuru butter, and 100% real kakadu plump. I'll talk about each and every ingredient in brief when I'll talk about the products. Now talking about the range, it comes with serum, day cream as well as night cream. We'll start with the serum because it is one of the most hyped product when it comes to the whole range. Talking about the packaging, this comes into a dark tinted bottle just like any other vitamin C serum to prevent it from a direct sunlight. Now another thing which is very significant and very prominent is the dropper, because I'm a big fan of dropper and pump to maintain the hygiene of the product. Now the price of this one is 549 rupees for 30 ml. Talking about the consistency and the fragrance of the product, it's not exactly watery है, but थोड़ा gel based है, and most of the vitamin C serums are clear, but ये थोड़ा सा हल्का से, if you'll see, there's a white tint into this. Talking about the fragrance, fresh fragrance है, थोड़ा citrusy है, which usually you see when it comes to vitamin C products. वो that thing is maintained. Once you will start blending it, क्विकली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, एज यू गाइस कैन सी, एंड गिव्स यू वेरी ब्राइटन, एकदम हेल्दी स्किन वाला रिजल्ट दिखाने लगता है. द टू मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इज काकाडू प्लम्प एंड वाइटामिन ई. नाउ काकाडू प्लम्प हैज़ 100% more vitamin C when it compared to oranges, and vitamin E has antioxidant properties. That means it will preserve your skin against free radicals such as sun damage and all. It states that it has 2% active ingredient of vitamin C along with vitamin E. Now talking about my experience with this product, like before that I would like to say how I like to use this is very important. मैं क्या करती हूँ, इसे morning में use करती हूँ as well as night में. Morning में once I'm done with my face wash, you have to apply it, like I like to apply it onto my face. dab करती हूँ, ज़्यादा मसाज नहीं करती हूँ. मसाज मैं डे क्रीम को करती हूँ, लगा के थोड़ा सा हल्का सा डैब करके मसाज कर लेती हूँ, and followed with my sunscreen. Night में again once I'm done with my day, I'll clean my face, इसको लगाती हूँ, अगेन डैप करती हूँ, फिर नाइट क्रीम लगा के सो जाती हूँ. तो दिस इज़ हाउ, लाइक डे और नाइट आपको दोनों टाइम यूज़ करना है ये प्रोडक्ट. टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस विद दिस प्रोडक्ट गाइज, द मोमेंट यूल अप्लाई ऑन टू योर स्किन, आप नोटिस करोगे कि आपकी स्किन ना बहुत हेल्दी लग रही है, थोड़ा ग्लो सा आ गया है, विच इज़ वट आई लुक फॉर. एंड इफ़ यूल यूज़ इट फॉर अ वाइल, यूल एक्चुअली सी दैट आपके डार्क स्पॉट्स और ये सब थोड़े थोड़े हल्के होने लगे हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड प्रोडक्ट इन द रेंज विच इज़ अ डे क्रीम. सो मॉर्निंग में आपने सीरम लगाया, फिर आप डे क्रीम पे जाएंगे. Day cream comes into a squeezy tube like this, and the price of this one is 349 rupees for 50 grams. It's a squeezy tube, plastic ki hai, that means it's travel friendly. Now let's just talk about the product itself. Now one thing which is very very prominent, once I'll show this to you guys, is that day cream में ना हल्का सा pink tint है. That means इफ़ यू आर अ पर्सन हु डज़ नॉट लाइक टू अप्लाई फाउंडेशन, आप ये लगाओगे ना तो हल्का सा ग्लो दिखने लगेगा आपके स्किन पे. एंड इट्स नॉट एक्सट्रीमली थिक ऑल्सो, थोड़ा सा वाटर बेस्ड है, मतलब हल्का सा है, दैट मीन्स जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा. एंड दिस इज़ वॉट आई लुक फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू, लाइक आई एम ऑयली स्किन पर्सन, तो मुझे कोई भी थिक कंसिस्टेंसी क्रीम ना पसंद नहीं है व्हेन इट कम्स टू डे क्रीम, बिकॉज मुझे पता है कि मैं स्वेट करूँगी, एंड बीइंग इन मुंबई जहाँ ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, वो प्रोडक्ट मुझे स्वेटी करा देगा मेरे फेस को, विच इज़ वॉट आई लाइक टू अवॉइड. बट वेर इज़ दिस, इफ़ यू सी, इट्स वाटर बेस्ड, थोड़ा सा है तो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. नाउ talking about the fragrance, again the fragrance is the just like serum, which has a pleasing fragrance, like refreshing fragrance I should rather say. And once you start dabbing it onto your skin, you will see that it won't
एक्सट्रीमली मैटिफाई योर स्किन और ना ही एक्सट्रीमली ऑयली करेगा, एक हेल्दी सा ग्लो देगा, विच आई शो इट टू यू गाइज. सो एज यू गाइज कैन सी ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो गया और एक स्किन में ग्लो आ गया. नाउ द 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डे क्रीम इज शिया बटर एज वेल एज विटामिन ई. शिया बटर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और विटामिन ई आपकी स्किन को डे सन डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा. बट स्टिल आई वुड से दैट गाइज प्लीज यूज अ सनस्क्रीन. नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन, दिस कम्स इन टू माई माइंड इज ये डे क्रीम में थोड़ा सनस्क्रीन फैक्टर होना चाहिए था. लैक्मे क्रीम, दिस इज वॉट इज माई ओपिनियन इफ यू ask for it, but apart from that it's a good product. Now talking about the third and the final product in the range is their night cream. Now as just like similar to the day cream, the packaging is quite similar. I would have suggested थोड़ा लाइट और थोड़ा डार्क कर देते तो डिफरेंस करना डिफरेंशिएट करना ईजी हो जाता. Now the price of this one is $3.99 for 50 grams and let me take the product out to show it to you. Okay. Now if you'll see, unlike day cream, this is more thick in consistency. The major ingredient of this one is murumuru butter and glycerine. The reason is that when it comes to night cream ना guys, तो थोड़ा moisture देने का main purpose होता है night cream का. तो consistency थोड़ी thick होती है ताकि आप अपनी skin पे massage करो और blood circulation बढ़े और product अंदर जाए और सुबह जब when you should wake up, it should give you very supple soft skin. This is exactly what this cream does. So if you see, the consistency is thick, it's not pinkish, it's little beige in the shade, and once I start blending, it takes little time. As I said, it has glycerine and murmuru butter, so that means आपको थोड़ा आपको थोड़ा blend करना पड़ेगा. I'll just show it to you. मैं इसको night में use करती हूँ after the serum, and this is how I like to blend. And if you see, skin is looking so hydrated and morning तक तो ये और भी अच्छी लगने लगती है. Talking about the fragrance is similar. The whole range का fragrance is similar. It's little citrusy, like very refreshing, which is what a person looks forward when it comes to vitamin C. And skin looks so damn healthy. Yeah. So now talking about my experience with the product, I really like it. मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. आई हैव सीन द डिफरेंस. बट इफ़ यू लास्ट मी पायल एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं तो प्लीज़ बताओ. देन आई वुड से प्लीज़ गो हैड विद द सीरम बिकॉज दिस इज़ द bomb.com प्रोडक्ट फ्रॉम माई साइड. दिस इज़ माई टेक ऑन Lakme 9 to 5 vitamin C range. I hope you like it, and if you did, then don't forget to thumbs up. And guys, if you haven't subscribed to my channel, what are you doing guys? Please subscribe कर दो. 1 सेकेंड लगता है, फ्री है और मेरे चैनल को हेल्प करता है. एंड इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन सोशल मीडिया पेजेस, प्लीज़ डू सो. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में. जब मैं जल्दी बोलती हूँ ना ऐसे बोलती हूँ. इन केस यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन सोशल मीडिया पेजेस, देन डू फॉलो मी. ऑल द लिंक्स आर देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एट द लास्ट आई विल से टेक केयर एंड स्टे प्रीटी. हाउ वाज माई सिंगिंग?